Myself, KV Manikanta, working as a project manager in Megawide Infrastructure Private Limited. This is Rajat Tiwari, a site in charge of this Cosmos project. Myself is Vishnu Kumar Pandey. I am the project director of the Megawide Infrastructure India Limited. I am taking care of Bangalore, Hyderabad and Visakhapatnam region. So I am deputed for Cosmos project, which is nearly 150 crores of project. So in our project, we have nearly 10 blocks. Entire project is commercial. ये शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट है जहाँ पर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा वर्कलोड को हमारे डिफाइन कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए सबसे सुटेबल ये है। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट में फॉज नहीं मिला अभी तक स्टील में। जो हम MIR रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो सारी चीज़ें रिपोर्ट अभी एज पर स्टैंडर्ड डिफाइन हुई हैं। इस वजह से हम टाटा स्टील को एक्सेप्टेंस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। Presently, where we are standing and where we are discussing is that Cosmos interchange, where we are constructing one the big shopping mall, the retail shop. Actually, Tata we have preferred as it is a good brand and it is a approved brand from client also. Since long back we are behind Tata. See, actually we opted for this solution because it is very easy to get the material and we can directly place to the site and we will fix directly. So no need to do any kind of cut bend and all. So directly we are getting material with BBS and shop drawings. So that's the thing which made us very good to opt these solutions. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टील का किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, दैट इज़ कटिंग बेंडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में कंक्लूड होता है। लेबर को इन्फॉर्मेशन देनी रहती है कैसी कटिंग बेंडिंग है, सेफली वर्क प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है टाटा स्टील के लिए हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड मिलती हैं और विथ स्टैंडर्ड लेवल। जो उनका कटिंग बेंडिंग शेड्यूल होना चाहिए, लैप लेंथ कितना मिलना चाहिए, जॉगल्स कितना होना चाहिए, हमारी जो भी इनकी शेड्यूल्स हैं वो सारी चीज़ें एज़ पर स्पेसिफिकेशन होती है, जो कि क्लाइंट की तरफ से या हमें ड्राइंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इससे हमारी लेबर कॉस्ट भी सेव होती है, हमारा टाइम भी सेव होता है और हम सारी चीज़ों को ईजिली प्रोवाइड कर पाते हैं एज़ अकॉर्डिंग टू आवर BBS। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए जो साइट पे चैलेंज रहता है वो कट एंड बेंडिंग के लिए रहता है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं लेबर्स को। लेबर उसके पीछे काम करते हैं, बट टाटा स्टील के साथ हमारे साथ ये बेनिफिट है कि हमारे अकॉर्डिंग टू BBS ये सारी कटिंग बेंडिंग शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, लैप लेंथ, जॉगल्स, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी हमें इतने अच्छे तरह से प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन और जो साइट पर हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो मैच करती है, जिससे हमारा दोनों चीज़ बेनिफिट होता है। पहला चीज़ लेबर की कॉस्ट सेव होती है, लेबर का मैन पावर सेव होता है, टाइम सेव होता है और उसको ईजिली प्लेस कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू BBS। और ये हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि किस चीज़ को कहाँ प्रोवाइड करना है, किस चीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है, जिससे हमारा जो टाइम सेविंग है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट का टाइम सेविंग होता है, वो हम अचीव कर पाते हैं बाय दिस कटिंग बेंडिंग शेड्यूल। Now in the construction industry, we found the opportunity where we can do the reinforcement into the mechanized way, because what we understood that for the construction the use of the reinforcement are very key factor for the progress as well as for the health and safety of the workman. In the past years, where we are using the conventional way of the cutting of the reinforcement and the fixing of the reinforcement on the side, where we are engaging the several workmen, the huge workforce is getting consumed for the cutting and bending of the steel. We have nearly 3,500 metric ton of steel. Out of this, we got nearly 150 metric ton as of now, and we have given further requirement of 700 metric ton for the coming 2 months. Where we are going to be use around 4,000 metric ton of the steel. Yeah, benefits is first timelines. Means whatever the time we are consuming for doing manual cutting bending and labor mobilization for the cutting bending is heavy task as of now. So if we are adapting for this solution, it is more beneficial for us in terms of time and commercial also. टाटा स्टील को रिकमेंड किया, पर्सनली मेरा भी रिकमेंडेशन था और क्लाइंट की तरफ से भी रिकमेंडेशन था कि टाटा स्टील को प्रोजेक्ट किया जाए।
क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया एक्सेप्टेंस है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। कट सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये कटिंग बेंडिंग शेड्यूल्स के साथ अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। इनके कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छे हैं, कोई भी डाउट होता है कोई भी चीज़ तो ये क्लियर अच्छा करते हैं। With this particular formula where we are getting cut and bend steel from the factory made, and it is made as a fit to the side. So that is what the benefit we are getting is that our the workman requirement for the cutting and bendings are getting reduced, due to which our the IDC means indirect cost are getting control, and we are getting the good manufactured steel where we can be fixed properly, and our productivity of the fixing all also getting increased. So this is the basic difference of our conventional way of the reinforcement cutting and bending, and from where we are getting the reinforcement for the factory, which is cut and bend. Presently we are associated with the Tata Steel, and for the cutting and bending we are associated with the Shamrat, who is our the cutting and bending player, who is giving us the cutting and bending reinforcement to us. Presently, this is my second project where we started using the cut and bend steel. Already one project we already completed with this formula, and we got the very good productivity of the product and productivity of the our workmen. Thank you. The basic challenges what we face into the conventional way of traditional way of our cutting and bending of the reinforcement is that we are planning for the raw material, we are bringing the raw material onto the side area is getting dumped with the raw material, then we are making the cut and bend yard where several space are getting consumed for the data. Nowadays we are getting the footprint of the project is there where we have to be only constructor. So that was a big challenge to manage our cut and bend yard and for the stacking of the steel. So to overcome of these particular challenges, the getting the cut and bend material from the factory is really very advisable. To overcome the problem of such issue of the traditional cut and bend steel, we were really searching very good formula or associate into the market, and we come across the Tata Steel, who made this particular process in very planned way and very efficient way, where they are taking the project requirement into end. So they are having their team to be create the BBS, they are planning for the raw material, and they are supplying the cut and bend material to the site. We have used cut bend. Which Tata solution have you used? Yeah, in Tata brand we have taken like cut and bend solutions, so which can be ready-made to cut and bend. We have other projects like MRO. We are using the same Tata Steel, and in Rajam, yeah, in Rajam also we are using the same, and CD2 also. So nearly 3 to 4 projects we are using the same brand. Yeah, good. Yes, actually, in old means, see, that is what I earlier informed. By doing manual cutting, bending, and machinery item can get any breakdown and all any point of your time. So unnecessarily, my schedule gets hampered. If I am going to the this solution, so it will be very much helpful. Like they will do all the thing and they will give delivery in the right time. I will recommend to all my colleagues, friends as well, my clients also. Yes, at the time of material stacking and material handling, we have taken very I got very good benefit. Like all the material is coming or with proper stacking and proper this what do you say tagging system and all. So all the manpower and we are very much like we can about to know what the material we are going to use and where it is, and we can easily handle the material directly to the work locations.